Good morning, class. Now I'm gonna start our civics fourth chapter. Name of this chapter is Growing Up as Boys and Girls. Before we start this chapter, I just want to tell you that there are something or some situation where we just say that this is done by a boy or this is done by a girl. Don't you? Yes. The same thing is described in this chapter. We will study in this chapter. Okay. So, once being a girl or a boy is our identity. ये हमारी identity है कि हम लड़के हैं या लड़की हैं. This is our identity. Secondly, one's identity, and our society also tells about the kind of behavior is acceptable to the girl or a boy. Suppose if I'm a girl, I should talk softly. I pretend to be a nice, and I should do a cooking work, and this is to not follow in boys. That boy must be do a strong work. He should never cry. So these are the things or a behavior which is acceptable in our society or elsewhere. Now coming here, that what the chapter will tell you in this whole sections, that the role of women play an important role, and the work they do are usually valued less than the role men play and the work they do. Exactly, if a man is doing a official work or a outside work, he is valued more than a woman. Suppose you have your mother in house doing a household work. We as people in a society, we think similar, that she is doing nothing, she is just doing a household work, that we just categorize, or we just not include in the work. Okay, so the definition of work in our society is different for a different identity of a person, being a woman or a man. So in this chapter we will also learn about or examine how the inequalities between men and women emerges in the area of work. Yes, हम इस पूरे चैप्टर में ये एग्जामिन करेंगे या हम ये चीज़ देखेंगे कि किस तरीके से हमारी इनइक्वालिटी बढ़ती है डिफरेंट ऑफ वर्क में, अगर वो किसी और या किसी और जेंडर से किया जाए. सपोज सो the whole concept in this chapter which we highlight is gender justice is an important issue to be highlighted here. So gender justice should be the topic or the main examine point in this chapter. So let's start. Okay. Before we start our chapter, there are some case studies which are given in the world and in context to the India. First is growing up in Samoa in 1920s. So this is the case tree of the Samoa Island, and it is a large group of island of small island. Suppose छोटे छोटे आइलैंड्स को मिला करके एक बड़ा आइलैंड बना है जिसका नाम इन्होंने रखा है समोआ आइलैंड. इट इज़ लोकेटेड इन सदर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन, and in 1920s, according to the research reporter, Samoa society children did not go to school. So children did not go to the school here. Then how other than this, what they do, many things they do, that is how to take care of their children or do a household work, older children and from the adult. So the children don't go to school, other than they do work like take care of their children or learning about what to cook or how to cook to their adult or the older than the older children's. The main activity which is very important activity is fishing activities. Okay, so young people therefore learn this activity, and when they
come to the age of 16, they started going along with their older children's for fishing expedition. But some children और in childhood, अगर आप अपना childhood देखें इसके अकॉर्डिंग या इन आइलैंड के लोगों के अकॉर्डिंग, तो आप थोड़ा डिफरेंट पाएंगे, क्योंकि आपका चाइल्डहुड इस तरीके से डिपेंड नहीं करता है, बिकॉज यू हैव योर प्री स्कूलिंग, देन योर प्राइमरी स्कूल, देन so on. So you start your childhood in a ruling way, I should say, or in a sequence way. Okay, so there is a sequence of everything. Then you also have here, when the people of this Samoa Islands, the children or a baby could not walk, their mother or the other adults no longer look after them. तो जो बेबीज़ होते हैं, अगर वो थोड़ा वॉक करने लगें या थोड़ा सा क्रॉल करते हैं, तो उनको वो उनसे बड़े जो बच्चे होते हैं वो उनको संभालते हैं, और उनकी जो मदर या उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो अपना डेली एक्टिविटीज़ के लिए बाहर चले जाते हैं, जस्ट लाइक फिशिंग करने के लिए बाहर, और बाद में पीछे उनके जो बड़े बच्चे हैं वो उनके छोटे भाई बहनों को टेक केयर करेंगे. ओके, सो यंग as a 5-year-old took over responsibility. Both boys and girls looked after their younger siblings. So they look after their younger siblings at the age of 5 only, and at the age of 9-year-old he joined the older boys in the learning outdoor jobs like fishing, planting coconut. So these are the activities of a boy at the age of 9 age पे आते आते वो बाहर जाकर फिशिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, और किस तरीके से कोकोनट के प्लांट्स लगाए जाते हैं वो सीखते हैं. एंड गर्ल्स क्या करती हैं, दे डू अ लॉट ऑफ वर्क, एंड they do the lot of work same as the boy in the age of 9 and 5. Then here is the important thing, once they become the teenager, they had much more freedom. They have much more freedom to go and do a fishing trip work in the fishing work, then plantation, and learn how to weave a basket कैसे बनाया जाता है. Then special cooking houses were placed there, and this work was supposed to be done by boys especially, while girls help with the preparation. So this is the story of Samoa Island, where the condition or the situation of boys and girls at different age time. So now coming to the other case study of growing up male in Madhya Pradesh in the year 1960s. So this is the case of Madhya Pradesh. In Madhya Pradesh there is a small town where from class 6 onward, boys and girls went to separate schools. The girls' school was designed very differently from the boys' school. They had a central courtyard where they played in total seclusion and safety from the outside world. So in the Madhya Pradesh, there is a small town where after the age or after the class 6, the boy and girl have a different schools, which differently shows the different outlook of the society. The school was open while the one for girls was closed. Here the structure of building is also different for the girls school and boys school. Here the boys school is
attached to, or it is outside the school campus, or it is just outside the building. But for a girl, it is inside the building area, that is in the inner courtyard. So the boys school had much much more area which is shown there. Plus there is also one more thing which we have to understand here is, every evening once school was over, the boys watched as hundreds of schoolgirls crowded the narrow street. As these girls walked on the street, they looked so purposefully. This was unlike the boys who used the street as a place to stand around idly, to play, to try out tricks with their bicycle. For the girls, the street was simply a place to get straight home. The girl always went to group, perhaps because they also carried fear of being teased or attacked. So after this is a normal situation, but in Madhya Pradesh, in this small town, the case is slightly different, that in a narrow street, the girls walked after the school, and same the boys also walk. But the situation is different here. अगर आप छुट्टी के बाद घर जाते हैं, तो लड़के जो होते हैं वो या तो आराम से धीरे धीरे अपने साथ, अपने 2-3 दोस्तों के साथ जाते हैं, या साइकिल में कुछ स्टंट करते हैं, या खड़े रहते हैं. लेकिन अगर आप गर्ल्स को देखें, उनका क्लियर रहता है दैट दे वॉक इन अ ग्रुप. ओके, दे वॉक इन अ ग्रुप, दे talk in a low voice, and the purpose of using this street is simply to go to school and just to come back to the home. So, and why the situation is different? Because girls always have a fear of being teased or attacked. So because the girls are looked as a पर्पसफुल, इसीलिए उन्हें ये डर लगा रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए उन्हें, बिकॉज ऑफ द सोसाइटी सिचुएशन. सेकेंडली, दे ऑल्सो फियर ऑफ कि उन्हें कोई परेशान ना कर दे. सो दिस इज़ द कंडीशन विच इज़ रेफर्ड in this paragraph. Okay, after reading these two examples above, we realize that there are many different ways of growing up. Often we think that there is only one way in which children grow up. This is because we are most familiar with our own experiences. If we talk to the elder in our family, we will see that their childhood were probably very different from ours. Yes, अगर आप दोनों सिचुएशन को देखें तो दोनों सिचुएशन डिफरेंट हैं. जहाँ पे एक एज पे गर्ल्स यानी टीनेजर्स गर्ल्स को अलाउ होता है कि they can go to fishing trip, but in the Madhya Pradesh the situation is different. The fear of being teased in the age of 16 or 14 is more. So you can see the difference. And secondly, if you ask to your older people or family people how their childhood or how was their childhood, you will just realize how difficult or how different is the situation. So please do ask to your family member how's their experience of childhood. Okay, now coming to this paragraph. Okay, this paragraph is clearly important. Plus this clearly show the society review according to our own main selection of toys. Okay, so society make a clear distinction between the boys and girls, this being from a very young age. हमारी जो सोसाइटी है वो हमारे आइडेंटिटी या जेंडर आइडेंटिटी को पहले ही
डिवाइड या डिस्टिंक्ट कर देती हैं कि हम बॉय हैं कि हम गर्ल्स हैं। किस तरीके से? एट अ वेरी यंग एज। सपोज अगर कोई बेबी है, इफ़ इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल, तो ये क्लियरली डिफाइन कर दिया जाता है कि गर्ल हैं तो उन्हें डॉल दिया जाए, और ये बॉय हैं तो इनको कोई गन या कोई ऐसा मॉन्स्टर टाइप या ट्रेन, एरोप्लेन, समथिंग लाइक दिस उनको दिया जाए। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज our society thinks that girl should play with the toy or a doll only, and boy should do the rest of the things. So choosing a toy, okay, choosing a toy become a way of telling a children that they will have a different future when they become men and women. If we think about it, this differences is created in the smallest and the most everyday things. So अगर हम ये चीज़ बताएं आपको कि टॉयज़ अगर हम किसी बच्चे को देखते हैं तो वो अपना जो फ्यूचर है या अपने जो आइडियाज़ है उसी के अकॉर्डिंग सोचता है, और ये जनरल ही है। देन सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ the way of looking the girls and the boys by the society is differently. And one more example is how girl must dress, what games boy should play, how girl needs to talk softly or boy need to be tough. So this type of criteria is made by the society, which is somewhat very very wrong. All these are way of telling our children that they have special role to play when they grow up to be men and women later in life. This affect the subject we can study or the career we can choose. So एट द वेरी यंग एज अगर हम बच्चे को कहें कि आप इससे खेलिए, इससे मत खेलिए, और सॉफ्ट टॉय से खेलिए, बॉयज़ को कहेंगे आप एरोप्लेन और गैजेट यूज़ करिए, तो हम सिंपली उनके माइंड सेट को एक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम इसे भेज रहे हैं. सो दिस टाइप ऑफ gender distinctions were made by the society which leads to the choices of future in a very effective way or in a very different way. Okay, now in most society including our own, the role men and women play or a work they do are not valued equally. Men and women do not have the same status. Yes, you agree with me that men and women, if they are doing a work, be any work related to a household or outside the household, is considered or is seen differently for men and women. Now we will study in this next page about this topic. Okay, so in this page, my mother does not work. So this is a small story. Okay, I just give you a summary of this story and you will read it, not so difficult. So here is one child, okay, who asking about mother, please join, today my teacher wants some voluntary to do some work in the school, so you just come. So उनकी जो मम्मी होती हैं वो कहती हैं कि नो बेटा, आई विल हैव टू डू अ वर्क इन ऑफिस, सो आई कांट कम. So child say, mama, you don't do any work, and Harmit mother is very good, she always come for a volunteer, आप कभी नहीं आते हो. Then what happened the next? The mother say, okay, you think that Harmit's mother do not do anything. Then the next day she go to the house of Sonalika, and where she talk about there is a doubt to my child that you don't do any work, so you are very free. So her
child say, yes, of course, my mother is do nothing, she just do a housework which is not considered as a housework. Then next day, both the mother decided that they will go to the strike, they will not do any work from tomorrow. So जो बच्चे होते हैं वो बड़े खुश हो जाते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, हम हैं, हम अपना काम कर लेंगे, एंड ऑल्सो वी विल टेक केयर ऑफ द हाउस ऑल्सो. जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है एंड एवरीबडी इज सो हरी अप बिकॉज नथिंग इज ऑन द टाइम, नथिंग इज प्रिपेयर्ड बिकॉज मदर इज ऑन स्ट्राइक. सेकेंडली, जब ये पूछा जाता है कि ऐसा आपने ब्रेकफास्ट क्यों नहीं बनाया मम्मा, और आपने हमें बताया क्यों नहीं, तो मदर का जो जवाब आता है वो ये होता है कि आज तो मेरा स्ट्राइक है, इसलिए मैं तो कोई काम नहीं करने वाली, एंड आवर सर्वेंट इज़ ऑल्सो इन हॉलीडे. अब कैसे भी करके उन्होंने अपना, सभी ने अपनी ड्रेस तैयार किया, ब्रेकफास्ट तैयार किया, तब तक स्कूल की के लिए बस आ जाती है, और इतनी जल्दी होते हैं सब कि सब के सब घर से निकलने में लेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्कूल बस भी छूट जाती है. जब उनकी मदर लंच की बात करती हैं कि बच्चे स्कूल में क्या खाएंगे, सो द फादर जस्ट से आई विल गिव हिम अ मनी एंड दे विल ईट इन द कैंटीन और सो. देन in the evening, when the father comes to house, he is so exhausted, so tired, he asks about the what is wrong with the house. The house is so dirty, it look like कि यहाँ पे कोई disaster आया है. So did you accept it to remain at exactly the same condition in which you left in this morning, dear? So mother just say that आपको क्या लगता है जिस तरीके से आप सुबह ये सारा घर एकदम आप ऐसे छोड़ के जाते हैं वैसे ही रहेगा. सो द इम्पोर्टेंस ऑफ हाउस वर्क और द वर्क द वुमेन डू इन द हाउस इज़ नॉट कंसिडर एज अ वर्क. सो दिस होल स्टोरी अबाउट द हाउस वर्क. सो जो आपकी मदर या आपकी सिस्टर घर पे काम करती हैं वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. तो वो स्टोरी इसी के लिए है. आई नो सम ऑफ द पीपल्स हैव द सेम व्यू अबाउट द हाउस वर्क कि आपकी मम्मा जो है वो काम नहीं करती, वो सिर्फ घर का काम करती हैं. सो प्लीज़ चेंज योर थॉट्स. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज द टॉपिक इज़ valuing the housework. Okay, many women work in offices and many do only a household work. Okay, valuing housework is an important element which need to be propagated. If we look at the lives of the domestic workers, they are involved in the activities like sweeping, cleaning, cooking, washing clothes and dishes, or looking after the most of these are women. A number of household work actually involve many different tasks. The work required great strength and physical demanding situation. So valuing a household work means you should respect or you should give the same equal importance to the household work also. Okay, second is caregiving. So your mother also do a caregiving task. Suppose in your house, in the family, if somebody is sick or some kind of fever, your mother is the only person who take care apart from the other work. अगर आप नोटिस करें, केयर गिविंग टास्क जो है वो सिर्फ आपकी मदर ही करती हैं. अगर कोई भी सिचुएशन या फैमिली में कोई भी मेंबर अगर बीमार हो तो वही जो है वो जग करके अगर वो बाहर का भी काम करती हैं और फिर घर आकर के आपको भी टेक केयर या ख्याल रखती हैं. सो दिस इज़ अ वेरी important job she do.
Now coming to the devaluing it. Okay, what is devaluing it? It is also assumed that this is a sometime that comes naturally to a woman. It therefore does not have to be paid for, and society devalue this work. Exactly. Our society have this thought or a exactly thought that जो वर्क या जो काम आपको पैसे या जिस काम से आपको वेजेस या पैसे मिलते हैं वो ज़्यादा वैल्यू रखता है, इसीलिए केयर गिविंग टास्क और हाउस होल्ड वर्क को वर्क नहीं समझा जाता, उसकी वैल्यू कम की जाती है क्योंकि दे डोंट रिसीव एनी मनी. Okay, so just understand this old concept. Value is giving respect or just giving the same equality of status to the work women do. Caregiving, the take care of the family member in the time of illness, is done by women also. Devaluing, when you not consider the work women do, or you just um balance it with the money, is a devaluing thing. Now coming to the next topic is the lives of domestic worker. Okay, class, here this lives of domestic worker. So we learn about the hermit's mother was not the only one who did the household work. There is also a servant, that is Mangala, who is the domestic helper. In many homes, in many homes, particularly in the town or a city, the employ domestic workers doing a lot of work, that is sweeping, cleaning, and washing clothes, dishes, cooking, looking after the young children. Most domestic workers were women. Even young boys and girls are also employed to do this work. आपके घरों में अगर कोई काम करने आते हैं वो भी हाउस होल्ड वर्क करते हैं, and the wages are low. They continuously do the work but the wages are very low and does not have much value also. They wake up they wake up in morning 5 o'clock and sleep at 12 at night, so they have to do a lot of work, the work in the home plus work outside as a servant is required very great strength. So this is what Melanie, a domestic worker, had to say about the experience. एक मिलानी हैं जिनका नाम मिलानी है, जो दिल्ली में काम करती हैं, वो अपने फर्स्ट जॉब के एक्सपीरियंस को बताती हैं कि वो एक रिच फैमिली में काम करती थी जो कि 3 स्टोरी बिल्डिंग हाउस थी, और वहाँ पे उनके साथ 2 और भी काम करती थी, एंड द लैंडलॉर्ड और जिनको यहाँ पे बताया गया है मैम साहब, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी. ओके, सो मिलानी का जो काम था वो सिर्फ किचन तक ही था. शी वेकअप एट 5 o'clock और उनको ब्रेकफास्ट में चाय और 2 रोटी मिलती थी. एक्स्ट्रा रोटी के लिए वो डिमांड नहीं कर सकती थी बिकॉज उन्हें दी नहीं जाती थी. जो उनके साथ जो 2 बच्चियां काम करती थीं वो कभी कभी बेग करती थी कि एक्स्ट्रा रोटी देने के लिए. सो शी सीक्रेटली मेक अ रोटी एंड देन गिव टू दीज 2 गर्ल. Apart from this, the working condition is so long that they have no uh, time for the rest. In winter time they were not allowed to wear sleepers in the house, so this is the why their feet swell up and in the cold. Mem Saabs is very strict, so they were not allowed or they were fear of talking to them about their condition, because अगर वो कुछ पूछेंगे तो वो उन्हें ह्यूमिलिएट किया जाता था या फिर उन्हें बहुत गुस्से से उन्हें डांट दिया जाता था. जो आजकल आप देख सकते हैं सोसाइटी में हम अपने हाउस वर्कर्स को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, एग्जैक्टली इज़ गिवन इन दिस सिचुएशन ऑल्सो. सो
She asked the question to herself only, did we not work all day? क्या हम लोग काम पूरे दिन नहीं करते? Did we not deserve to be treated with the same respect? क्या हम लोगों को भी वही सेम रिस्पेक्ट नहीं मिल सकती जिस तरीके से इन सभी को, या जो जिनके हम काम कर रहे हैं? So yes, they do deserve a same respect, they do deserve the same right of treatment of eating any balanced diet, or they also they also a human being before a house worker. She is a human being, so we should respect the work she do. In fact, what we commonly term as housework एक्चुअली इन्वॉल्व मैनी डिफरेंट टास्क. अगर हम हाउस वर्क की बात करें तो आप सिर्फ कह देते हैं हाँ घर का काम, लेकिन उस घर के काम या हाउस वर्क में बहुत सारे डिफरेंट काम्स होते हैं जिसमें रिक्वायर्ड होता है हैवी फिजिकल वर्क. ये बोथ रूरल और अर्बन के लिए है और सेम फिजिकल स्ट्रेंथ लगता है. जैसे अगर आप रूरल एरिया में देखें तो कुएं से पानी निकालना टू फेच अ वाटर, चाहे वो कुएं से हो, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके जाके लाना हो, या घर पे खाना बनाने के लिए लकड़ियों को बाहर से लाके सर पे उठाते हुए हैवी लोड्स ऑन द हेड लेकर आना, इज़ ऑल्सो अ वेरी फिजिकल टास्किंग. कपड़े धोना, क्लीनिंग, स्वीपिंग एंड पिकिंग अप द लोड्स रिक्वायर्ड बेंडिंग, लिफ्टिंग एंड कैरिंग. सो ये काम करने में उनको उठना, बैठना, चढ़ना होता है, जिसकी वजह से they also have a lot of physical tasks. And the most important and very important, which we neglect in our society, that she remain in front of the stove or cooking for their family member hours and hours in the hot stove. गर्मियों में भी उन्हें खाना बनाने के लिए गैस स्टोव के सामने रहना पड़ता है. द वर्क वुमेन डू इज स्ट्रेंथियस एंड फिजिकली डिमांडिंग, द वर्ड दैट वी नॉर्मली एसोसिएट विद द मैन. यस, सो जो नाम या जो टर्म हम अपनी सोसाइटी में मेंस के लिए यूज़ करते हैं, एक्चुअल में द वुमेन डिज़र्व द मोस्ट दीज टर्म. अगर हम और टर्म्स की बात करें हाउस वर्क में, तो केयर गिविंग. इसमें क्या होता है कि केयर गिविंग टास्क में टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है. आप अपने सारे काम करने के बाद द वुमेन ऑल्सो लुक आफ्टर देयर मेम्बर्स, एंड plus she also do a lot of work outside the home, come back, and women spend much more time working than men and have much less time of leisure. Yes, this is very important. A man do a work outside the house, and if he come back, he have a time for leisure, he have a time for sleep. But when a woman come from outside doing a work and she don't have any time for relax, she start doing her household work. So women do a lot of work. In 24 hours she is doing a work only. Now there is one scenario which is given here, a central statistical organization of India, which shows a special study done by this, how the women do or what they were paid weekly, and there is a comparison between a man and woman. So you can just do this in your book only. Okay, now coming to this topic, that is women's work and equality. Of course, women's work and equality is very important term, and which require a very good source of thinking here. So here we start this women's work and equality. Here this is the summary of the chapter plus the conclusion, or what the government do in this inequality situation of women. So here, low value attached to the woman's household and caregiving work is not an individual or a family matter. और अगर हमें इस चीज़ को हटाना है इनइक्वालिटी बिटवीन मेन और वुमेन के वर्क में, वी जस्ट नॉट डू इंडिविजुअली और
family. We can do it with the things with the government if it give a law or do any action work. So equality is an important principle of our constitution always say male or female should not become a reason for discrimination. So हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं दैट डज नॉट डिफाइन दैट यू आर डिस्क्रिमिनेटेड. तो ये चीज़ जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल नहीं बताया गया है कि हमें डिफरेंसेस करना चाहिए, ये नहीं लिखा गया. बट जो लिखा गया वो ये है कि हमें कभी भी किसी को जेंडर के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए. सो इन रियलिटी वी डू दिस ऑन द बेसिस ऑफ द gender, but the government is therefore committed and understanding the reason for this and taking a positive step to remedy the situation. So government ने इस चीज़ को look after किया है, प्लस उन्होंने इस चीज़ को नोटिस करते हुए कुछ स्टेप्स लिए हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है. फर्स्टली जो बर्डन गर्ल चाइल्ड के ऊपर आ जाता है इफ़ अ मदर डूइंग अ वर्क आउटसाइड, तो उनके यंगर ब्रदर या सिस्टर को देखने के लिए जो उनके बड़े भाई बहन होते हैं वो घर पे रहते हैं, जिसकी वजह से उनके जो पढ़ाई का बहुत नुकसान होता है. उसके लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स लिया है कि उन्होंने ये चीज़ डिफाइन कर दी है कि गवर्नमेंट हैज़ सेटअप एन आंगनवाड़ी और अ चाइल्ड केयर सेंटर इन विलेजेस, सेवरल विलेजेस और इन द सिटीज़ ऑल्सो. उन्होंने ये स्टेप लिया है. अब आंगनबाड़ी क्या होता है, सपोज अ वुमेन डूइंग अ वर्क बट शी ऑल्सो हैविंग अ चाइल्ड. सो इस कंडीशन में वो अपने बच्चों को आंगनवाड़ी में रख सकते हैं जहाँ पे उनको लेडीज़ उनका लुक आफ्टर करेंगी. प्लीज़ सी हियर, दिस इज़ द आंगनवाड़ी जहाँ पे उनको छोटी छोटी चीज़ों के साथ सिखाया जाएगा या उनको टेक केयर किया जाएगा, उनको हर तरीके से उनकी परवरिश की जाएगी जब तक उनकी मदर जॉब कर रही हैं या उस टाइम तक जो वर्किंग टाइम है. गवर्नमेंट ने ऑल्सो सिटीज़ के लिए भी ये किया है कि किसी फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन में 30 एम्प्लॉयर वुमेंस हैं तो वहाँ पे क्रिचेस बनाए गए हैं जहाँ पे वो अपने वर्किंग टाइम पे अपने बच्चों को वहाँ पे छोड़ सकती हैं और जिससे वो आराम से अपना काम कर सकते हैं विदाउट एनी अदर माइंड बर्डन. सो it is also make it possible for more girls to attend a school in these areas or in this country. So gender play a very important role for discriminating, but what the constitution say that gender never define your inequality. कभी भी जेंडर को आपकी इनइक्वालिटी नहीं डिस्क्रिमिनेट करनी चाहिए. इसीलिए everybody is equal, everybody have their own choices to choose any toy or play with or choose your future. Plus women should not burden with other extra work. Do help or do take care of your mother, sister in the house and give value to the household work. So this is your chapter, and here are some questions or posters which is created by a women group in Bengal. Can you write any interesting slogan for the poster? So please, this is the poster. The title is given in the Bengali. You just write your own title, what you want to give the title name. Okay, here are some exercise which is done in this in your classwork copy. I will provide you a PDF file for this, and glossary part you have to do in your classwork copy. Thank you class, have a good day.